Assalamu alaikum dear students. I am ANJUM SHAFIQUE, your biology teacher for grade 11. And today I'm going to start another very important and very interesting topic, that is levels of biological organization. Dear students, आपने grade 9 में इसकी कुछ basic जो terms हैं उसको discuss किया था. यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर यानी 11th ग्रेड में हम इसकी थोड़ी मजीद कुछ एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू द क्लास बोर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चंस. इसका कुछ पोर्शन आप पहले भी जो इसके बेसिक्स हैं वो ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं. यहाँ पर मजीद थोड़ी सी एक्सटेंशन है इस टॉपिक की. सो लेट्स स्टार्ट. So dear students, hundreds of chemical reactions are involved in maintaining life of even simplest organism. Clear? मीन्स कि जो सबसे सादा सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, मीन्स के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस स्टूडेंट्स उनको भी अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस जो हैं उनसे गुजरना पड़ता है 24/7. क्लियर? और यहां पर एक मजे की बात ये कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर कि अब तक जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं, जो देयर नंबर इज 118. क्लियर? द टोटल number of elements found on the face of the earth are 118. जबकि हम बात कर रहे हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जबकि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स अब तक जो डिस्कवर हुए वो 100 की रेंज में, नॉट इवन इन हंड्रेड्स. क्लियर? अमंग these 118 elements, (92) elements are naturally occurring. क्लियर? और ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से मौजूद है. और डियर स्टूडेंट्स, अब इन 92 टोटल कितने हैं अब तक डिस्कवर हो चुके? 118. और उसमें से 92 जो हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग हैं. और इन 92 में भी अमंग these 92 naturally occurring
elements (16) elements are mostly found to make the mass of living organisms. क्लियर? टोटल 118, उनमें से 92 नेचुरली अकरिंग, और उन 92 नेचुरली अकरिंग में भी मोस्टली 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मैस यानी उनकी बॉडी यानी उनके स्ट्रक्चर्स बनाने में मिलते हैं. क्लियर? These 16 elements that make the mass of living organisms are called bioelements. तो बात बहुत क्लियर है. बायो मीन्स लाइफ. तो ऐसे एलिमेंट्स जो लाइफ यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं वो 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स. अब यहां पर भी हैरानी की बात है स्टूडेंट्स. अब इन 16 में भी अमंग these 16 bioelements, six elements make 99% of the body mass. And remaining 1%, remaining 10 elements means the bioelements make 1% of the body mass. क्लियर? और इनकी तरतीब किस तरह से है आइए स्टूडेंट्स इसको कुछ डिटेल से देखते हैं. इनमें से कुछ डिटेल्स आप पहले पढ़ के आ चुके हैं ग्रेड 9 में और कुछ डिटेल्स इस एफएससी लेवल में पार्ट 1 में आप देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स that make 99% of the body mass. तो पहले उनकी लिस्ट देख लेते हैं. Among them, number 1 is oxygen. Number 2 is carbon.
Number 3 is hydrogen. Number 4 is nitrogen. Number 5 is calcium. And number 6 is phosphorus. Clear? And these are denoted by, oxygen is denoted by O, carbon by C, hydrogen by H, nitrogen by N, calcium by Ca, and phosphorus by capital P. Clear? And now, how they make the 99%? So oxygen is present up to 65%. Carbon is present up to 18%. Hydrogen is present up to 10%. Nitrogen is present up to 3%. Calcium is present up to 2%. And phosphorus is present up to 1% of the total body mass. So if you sum them up all, it makes 99%. And now the elements that make the remaining 1% of the body mass. So they include, number 1 is potassium. Number 2 is sulfur. Number 3 is chlorine. Number 4 is sodium. Number 5 is magnesium or magnesium. Number 6 is iron. Number 6 is iron. Number 7 is copper. Number 8 is zinc. Number 9 is manganese. And number 10 is iodine. Clear? So these are the remaining 10 bioelements which together make up about 1%. So what are the symbols? You know, potassium K, sulfur S, chlorine Cl, sodium capital N and A, magnesium Mg, iron Fe, copper Cu, zinc Zn, manganese Mn, and iodine I. Clear? And now what is their, how they make the approximate 1%? So potassium, it is 0.35%.
sulfur, it is 0.25%. Chlorine, it is 0.15%. Sodium, it is also 0.15%. Magnesium, it is 0.05%. Iron, it is 0.004%. While copper, zinc, manganese, and iodine, all these are present in traces. These are the trace elements. इनको trace elements भी कहा जाता है dear students. और dear students, ये MCQs point of view से बहुत अहम है. Board examination, class test, monthly test, pre-boards, midterms, every kind of examination. ये जो सी percentage जो हमने discuss की in 16 bio elements की, that is very much important. और खास तौर पर आप याद रखिएगा यहाँ पर जो ट्रेस एलिमेंट्स, इन चारों को ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है. आप इनमें से कोई से भी 3 ट्रेस एलिमेंट्स और चौथा इनमें से कोई एक डाल के आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेस एलिमेंट. क्लियर. और एक और चीज जहन में रखना डियर स्टूडेंट्स, जहां पर जो आयरन है, आयरन इट इज बेसिकली फेरस आयरन. ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखना है. इट इज फेरस. और फेरस आयरन डियर स्टूडेंट्स कौन सी होती है? जिस पर 2+ जो वैलेंसी होती है, क्योंकि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, Fe+, और दूसरी जो ज्यादा एबंडेंट है दैट इज फेरस, और तीसरी होती है फेरिक, Fe3+. ये 2+ और 3+. लेकिन यहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एबंडेंट है दैट इज इट्स फेरस फॉर्म. इज दैट क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ its table, the bar graph, which has been given in our book in order to explain the relative abundance, the percentage, the relative mass percentage of these bioelements. So this is O, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. हम इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे बिकॉज हमारे पास जो मैक्सिमम परसेंटेज वो 65 पे आ रही है. सो इसलिए हम यहां पर इसको स्टॉप करेंगे एट 70. सो अलोंग दिस एक्सिस वी आर गोइंग टू डिटरमिन द रिलेटिव mass percentage here along this axis. And along this axis here we are going to discuss the bioelements. The bioelements. Here, so this is a bar graph. So the highest percentage is of oxygen. It is 65%. Here, so this is basically
oxygen with highest percentage, that is 65. Clear? Up to this level. Then there is 18% carbon. So this is 20, and just below this 20 is 18. So that is basically the carbon. And then is hydrogen, 10%. So this is hydrogen. And now the nitrogen, 3%. So this is nitrogen, 3%. Then there is calcium, 2%. And finally, the phosphorus, 1%. So this is phosphorus, 1%, and the remaining all also 1%. So this is for other 10 bio elements. Clear? And as you can see over here, so oxygen is at the topmost priority, 65%. So that shares a huge bar. Clear? So this is basically the percentage. This is the percentage composition of bioelements by mass of a human body. Clear? So this figure is actually representing this. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे द लेवल्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.